Assalamu alaikum. My name is Humair Hashmi, and I'll be doing history and systems of psychology with you. Let me give you a brief introduction of myself. I have a master's degree from Government College and another master's from the United States in the subject of psychology. Let us continue further. Let me give you an outline of the course कि हमारे कोर्स के objectives क्या हैं. Objectives से मुराद है that we would like you to be introduced to the developmental history of psychology, how the subject started, where it started, generally a description of the subject matter from the most ancient times to the modern times. Don't be afraid, we'll cover it gradually. I'll explain everything to you, we'll take our own time on it. That's one objective, to introduce you to the development of the subject. The other objective is to provide you with the most basic technology, terminology of the subject of psychology, so that it prepares you, it lays the foundation for you to understand other related areas of psychology. इस कोर्स में आप सब कुछ कवर कर लेंगे, practically सब कुछ कवर कर लेंगे, which is now the broad field of psychology. And once you understand the basics of this course, then it will be easier for you to understand the other parts of the subject. And then the third is to help you to use that knowledge of psychology in your daily life, for your own welfare, for the welfare of people around you, to help yourselves. Misal ke taur par, if you get too uptight or nervous during exams, how to relax yourselves. For instance, if some babies are having problems of being aggressive with each other, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, then how to tackle those problems? These small, everyday problems that you encounter in life, you would have this basic knowledge to be able to use and to be able to tackle those problems. We'll take a look at the methodology कि हम कोर्स करेंगे कैसे. What I'll do is that I'll discuss the main features of a given topic. उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको. I'll give you some reference materials that you could read. I would give you examples from everyday life so that the subject matter that we are dealing with, you completely understand it and it becomes a part of your overall knowledge system. I might even quiz you verbally. For example, I might even ask you, Freud established the behaviorist school. Obviously, you don't know the answer today, but you will know the answer later. तो एक तो ये तरीका होगा कि मैं आपको लेक्चर दूंगा और उसके साथ साथ आपको क्विज भी करता जाऊंगा. अभी तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, Freud developed or his system is known as the behaviorist system. Of course, the answer is wrong because Freud's system is known as psychoanalytical system. Psychoanalytical system. He was the inventor of what is today known as the system of psychoanalysis. थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं. मैं आपको ग्रेडिंग के बारे में भी बता दूं. ग्रेडिंग से मुराद ये है कि आपके नंबर कैसे लगाए जाएंगे, आपके ग्रेड्स कैसे आएंगे.
इसके 3 चीज़ें आपको ख्याल में रखनी हैं, जो कि आपके जो हैंडआउट मिलेगा आपको उसमें भी मौजूद हैं, इसलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी ग्रेडिंग जो है 35% वेटेज ऑफ द एंटायर कोर्स वुड बी अप टू मिड टर्म एग्जाम, 50% weightage would be given to the final exam, which will be a comprehensive exam. Comprehensive means कि जो आप मिड टर्म से पहले पढ़ के आए हैं वो भी फाइनल एग्जाम में शामिल होगा, सारा या कुछ हिस्सा. And the third part of it is 15% weightage would be given to your take home assignments, जो आपको from time to time मैं देता रहूँगा. टेक्स्ट्स के बारे में बता दूँ, जो किताबें हैं वो हम 2 किताबें इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश की भी उर्दू की भी. इंग्लिश की जो किताब है वो है, आप जैसे नाम पढ़ रहे हैं, शुल्ट्ज एंड शुल्ट्ज, और उर्दू की जो किताब है वो है रफ़ीक जाफ़र एंड उमैर हाशमी. ये आपकी जो हैंडआउट्स मिले हैं उसमें मौजूद हैं इनके नाम, और ये इजीली अवेलेबल हैं बाजार में. दे शुडंट कॉस्ट यू टू मच मनी, फील फ्री टू बाय देम. एडिशनली I'll be giving you handouts for the entire course. It will be prepared by me and it will be based upon what we have covered, the entire course, and you can take a look at those too. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं. A quick review of the course up to the midterm exam. उसमें ऐसा करेंगे कि सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, दैट इज द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें एंशंट फिलॉसफी या साइकोलॉजी का क्या रंग था, किस तरह की थी ये. मिसाल के तौर पर, हाउ डिड द एंशंट रेजिडेंट्स, inhabitants of this region saw soul? What did they think about magic? What did they think about animism? How did they tackle mental diseases or physical diseases? Had they developed certain methodologies of treatment of mental diseases or treatment of physical diseases? ये सब कुछ हम पहला हिस्सा जो है ये हम उसमें करेंगे, जिसको मैंने कहा है एंशिएंट फिलॉसफी और साइकोलॉजी इन द सब कॉन्टिनेंट. फिलॉसफी स्लैश साइकोलॉजी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम कि साइकोलॉजी तो लेटर डेवलपमेंट है. प्रायर टू दिस, लेट अस से अबाउट द 15th 16th century onwards, prior to this there was no subject matter of psychology separated from the main body of philosophy. So at that time it was referred to as philosophy or slash psychology. इसीलिए मैं ये टर्म भी इस्तेमाल कर रहा हूँ. फिर हम देखेंगे सब कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के अलावा हम चले जाएंगे थोड़ी देर यूरोप में. यूरोप में हम क्या देखेंगे, हम जाके देखेंगे कि ग्रीक्स जो थे, मसलन एरिस्टोटल या प्लेटो या सोक्रेटिस, द एंशिएंट ग्रीक्स, दिस इज ऑफ कोर्स prior to the birth of Holy Christ. उनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की जो नॉलेज थी उनकी, वो क्या थी. So we will take a review of the Greek philosophy. Then we will come up to the Middle Ages, what are called the Middle Ages. Let us say from the 5th century AD to about the 12th century AD. AD means of course Anno Domini, which means after Christ. इसमें हम देखेंगे कि सेंट ऑगस्टीन की क्या मिसाल के तौर पर कंट्रीब्यूशन थी साइकोलॉजी की थॉट में, या हम देखेंगे कि इमाम गजाली की या इब्न रुश्द की क्या कंट्रीब्यूशन थी फिलॉसफी या साइकोलॉजी में. इसके बाद हम उससे आगे चलेंगे, ये भी सब हम मिड टर्म तक ही चल रहे हैं. इसके बाद हम देखेंगे कि रेनेसांस का साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ा. मिसाल के तौर पे रेने डिकार्टे जो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट या फिलॉसफर थे, उन्होंने क्या कहा और उनका क्या असर था साइकोलॉजिकल थॉट पर. और इसके बाद हम विल कम टू ब्रिटेन एंड टेक ए लुक एट ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म. आफ्टर ऑल, इंग्लिश हैव देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एंड देयर मेन कंट्रीब्यूशन इन द पास्ट हैज बीन व्हाट इज कॉल्ड एसोसिएशनिज्म. हाउ आइडियाज बिकम कनेक्टेड. Do ideas
become connected by chance, or is it because there are certain laws that connect ideas with each other? That was their main aim, and that is called associationism. इसमें हम जॉन लॉक, आपने यकीनन नाम सुना होगा, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में कुछ देखेंगे. फिर इसके अलावा हम देखेंगे हॉब्स की कंट्रीब्यूशन क्या है. ये तो हो गया ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म का. ये हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी आई एम जस्ट स्किपिंग थ्रू दीज. देन वी विल गो ऑन टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जर्मन्स एंड द फ्रेंच अगेन ड्यूरिंग द 18th एंड द 19th सेंचुरी. 18वीं सदी और 19वीं सदी के दरमियान जो फ्रेंच और जर्मन फिलोसफर्स या साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या आइडियाज़ दिए हमें, उन्होंने क्या सोच विचार की, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या जांचा, और फिर उन्होंने कैसे अपनी इंसाइट्स को कलमबंद किया और उसके बाद हम तक पहुंचाया, जिससे मैनकाइंड की डेवलपमेंट जो है वो बढ़ती चली गई. इस रेफरेंस में हम देखेंगे निहायत मशहूर साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर कह लीजिए दीद्रो को, जो फ्रेंच थे. इसके बाद हम देखेंगे कांट को, जो कि जर्मन थे. ये देखने के बाद वी विल गो ऑन टू रशिया. वी हैवंट बीन देयर सो फार. आफ्टर ऑल आपने नाम तो सुना होगा कि एक शख्स था, वो जब घंटी बजाता था तो उसने जो पालतू कुत्ते रखे हुए थे, वो घंटी बजाने से कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता था. दैट वाज ए ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट और ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, विच वी नाउ नो in the history of psychology as a main contributor who taught us how animals and human beings learn, and that is Ivan Pavlov. We will talk about him and his followers, और वो देखेंगे जिसको हम आजकल रिफ्लेक्सिव साइकोलॉजी कहते हैं या जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं. यहाँ से आने के बाद हम फिर वापस यूरोप में जाएंगे और देखेंगे कि फिजिकल साइंसेस का साइकोलॉजी पे क्या असर हुआ था. और फिजिकल साइंसेस में मसलन केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, इसका क्या असर हुआ था. इस रेफरेंस में हम देखेंगे कि बहुत अजीम साइंसदान थे डार्विन. हम देखेंगे कि डार्विन का जो इम्पैक्ट है वो फिलॉसफी या साइकोलॉजी पे क्या हुआ है, और उसका डार्विन की जो थियरीज हैं, आप जानते हैं कि उसने तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया का सफ़र किया था, बल्कि ज़्यादा ही, और जगह जगह से उसने ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए ये देखा था कि जानदार जो हैं ये डेवलप कैसे होते हैं. इसी चीज़ का, इसी साइंस का, फिजिकल साइंस का नफ्सियात पर या साइकोलॉजी पर भी बड़ा गहरा असर है. वील टेक ए लुक एट दैट, एंड देन ऑफ कोर्स वील टेक ए लुक एट व्हाट टुडे इज नोन एज फेचनर और फेकनर्स मेथड, हाउ the physical side of the nature impact human beings, their thinking, their mind, their consciousness. That is what we'll take a look at. This is Darwinian and a contribution to the development of psychology, and the impact of Fechner or Fechner, whichever way you want to pronounce it, both are correct. उसका क्या असर था. यहाँ तक तो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि हमने बंदों को डिस्कस किया है. Then we will go on to what is known as the structuralist school of psychology. A school of psychology is really a group of people who said same or similar things. That is what a school stands for. So the structuralist school of psychology is a school or a collection of people who said similar things. And one of the most important contributors in this school is Wundt, and you spell it W-U-N-D-T. आपके लिखा हुआ भी आ जाएगा, so you shouldn't be bothered about the spellings too much. It's written Wundt, pronounced as Wundt, and he was a German scientist who is considered to be the father, today considered to be the father of experimental psychology. Why is he considered to be the father of experimental psychology? Because he was the first one
who established a psychological laboratory. Prior to this, there was no psychological laboratory. People did not perform experiments in psychology. They did not bring two variables together and then saw the effect of those two variables upon each other and then wrote down the dependent variables. They just made their observations. They might have been known as armchair psychologists or philosophers. Their contributions were based upon observations, no doubt. The observations were very precise, but there was no psychological laboratory. So the main contribution of the structuralist school or Wilhelm Wundt is that he established the first psychological laboratory. We'll talk about him in some detail. From there, we'll go on to the second school, which is called the functionalist school of psychology. The functionalist school of psychology really emerged in the North American continent. You must have obviously heard about William James, a great psychologist, who could work 16 to 18 hours a day without a break, because he thought that man's mind and his body is capable of doing that kind of work, and he continued to work that way for his entire life. His very thick book called Principles of Psychology is considered a classic on psychology. So we will review what he had to say, how consciousness functions. Is there a purpose to consciousness? What does consciousness do for you and me? Are animals conscious? And what is consciousness for them? Does consciousness play tricks on us? Or is it an illusion completely? Well, all of these we will talk about in reference to the functionalist school. William James and his followers. अभी हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पे ही हैं. उसके इससे after William James we would be talking about the other great American psychologist, J.B. Watson. J.B. Watson was a teacher of psychology at the, as you are probably aware, if you are not, here it is. He was at the Johns Hopkins University, and he developed his own system of looking at psychology. He developed his own methodology of looking at various technologies that psychologists use. His system is known as behaviorism. We'll be talking about J.B. Watson's system. By the way, J.B. Watson, after he was asked to leave the university, he came to the other parts of America and he got involved in advertising and developed technologies of effective advertising. तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे. फिर behaviorism के साथ साथ we'll be talking about what is now known as neo-behaviorism. N-E-O. It's not new, it's neo. N-E-O. Neo-behaviorism, जिसमें कुछ और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के नाम आएंगे, such as Skinner. स्किनर ने भी बहुत अजीम कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं साइकोलॉजी में, और उसके ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स थे, most of his experiments related to animals. He used birds and rodents, चूहे या कबूतर या सफ़ेद फाख्ता के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स का नफ्सियात की ट्रेडिशन पे, नफ्सियात की सब्जेक्ट पे बहुत गहरा असर है. We would also be talking about Tolman, another one who is called a new behaviorist, and his theories would also be related to how human beings learn and how they perceive. Behaviorism और neo-behaviorism तक आपका मिड टर्म का कोर्स जो है ये मुकम्मल हो जाएगा. आपके मिड टर्म के कोर्स में ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होंगी. यहाँ तक आपकी वेटेज जो है एग्जाम की वो 35% है. अभी थोड़ा आगे चलें. मिड टर्म से जब हम आगे चलेंगे तो मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के दरमियान जो ओवरव्यू है वो कुछ इस तरह से है. जैसे हमने अमेरिका के और फिर यूरोप के स्कूल्स देखे, इसी तरह से हम अमेरिका से अब फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म पढ़ने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद, विल शिफ्ट बैक टू यूरोप and we'll be talking about
a German school which is called the Gestalt School. G-E-S-T-A-L-T. Gestalt is, it's a German word, it means a pattern or a configuration. इसमें भी बड़े अहम नाम हैं, और कौन से नाम हैं इसमें? Max Wertheimer is an important name in this. Then we have Kohler, another important name is this, in this school. And then we have Kafka, K-O-F-F-K-A, Kafka, not to be confused with Kafka. Kafka was a novelist. We are talking about Kafka. We'll be talking about these three and other German contributors in the Gestalt School. Gestalt School वालों की एक दो लाइनें ये भी बता दूं कि ये जो आप इस वक्त मुझे टेलीविजन पे देख रहे हैं, और इस पे तो दरअसल एक्चुअल फैक्ट में तो एक डॉट चल रहा है ना टेलीविजन पे, लेकिन आपको पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है. ये जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे जो जुमले सुन रहे हैं, ये क्या है? मैं तो वर्ड्स बोल रहा हूं, लेकिन आप वर्ड्स नहीं सुन रहे, आप सेंटेंसेस सुन रहे हैं. शायद आप सेंटेंसेस भी नहीं सुन रहे, आप पूरा का पूरा एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं. ये क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि Gestalt School discovered this fact that human perception is in gestalts, is in patterns. Human beings, animals perceive in patterns, in gestalts. So when you listen to a Mehdi Hasan Saab singing, you are not listening to notes, you are listening to a sher, and you are listening to a melody, a complete set, and that is a kind of a peculiarity, a characteristic of human mind, and that is the discovery of the Gestalt School. Iska kya impact hai? How do people perceive in patterns and gestalts, and how does this affect us psychologically? इसके बाद हम आएंगे Gestalt School की overview देखने के बाद. We will come to again in England, and we would be talking about a British psychologist by the name of William McDougall. William McDougall's system is known as dynamic psychology. William McDougall की जो theory थी, वो ये थी that human beings are born with certain propensities, what he called an instinct. Instinct is something that propels people. For instance, hunger is an instinct. For instance, thirst, need for rest. These are all instincts. And these to him were the driving force behind human behavior and human mind. And that is what is called the English dynamic psychology. We'll be talking about William McDougall in some detail and his instinct theory. We will then again go back to Russia and take a look at what is now known as historico-evolutionary psychology. How history led to the development of human mind and consciousness. We'll be talking about Vygotsky and Rubinstein. Once that is done, we will go back a little in time, and then we will review how psychologists at that particular time, that is late 18th and early 19th century, looked at mental illness. The main thrust of psychological thought had now shifted slightly to the attendance at mental illness. How do people become ill, mentally ill? Why do they become mentally ill? How can they be helped? What are the various ways in which people might be cured? All of that is the history of mental illness. We'll be taking a look at that after we've had a look at the European contribution. And in that regard, we'll be taking a look at Mesmer. आपने सुना होगा mesmerism. वो Mesmer एक psychologist या philosopher या healer था, उसी के नाम से वो related है. आपने सुना होगा Charcot का नाम. Charcot was prior to Freud, and he was a great healer. He was actually a doctor, a physical doctor, who learned also to treat mental disorders. So we'll be talking about that too. We'll be talking about other contributors. ये तो मैंने आपको मोटे-मोटे नाम बता दिए.
इसके साथ ही हम बात करेंगे बहुत ही मशहूर माहिर नफ्सियात की, सिगमंड फ्रॉयड. You are all probably familiar with Sigmund Freud, who was born in Vienna, was an Austrian doctor who trained in medicine and then changed over to treatment of mental disorders. And then he developed his own system, जो मैं अभी आपको मैंने गुजारिश की थी, जब मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था. He developed his own system, which is now known as the psychoanalytic system or psychoanalysis. His method of treatment and his theory about human behavior is known as psychoanalysis. We'd be talking about psychoanalysis and Sigmund Freud in some great detail. By the way, he had also an illustrious daughter who became a psychoanalyst who settled in England. Freud also migrated to England because he was a Jew, and during his time there was a persecution of Jews, as you probably know, you certainly know. During the Nazi regime in Germany, there was the persecution of the Jews, so he migrated to England, so did his daughter and his other members of the family. We'll be talking about his theory and his methodology, and then we'll be talking about two of his most famous followers. The first of these followers is C.G. Jung. C.G. Jung was a Swiss psychologist who trained in medicine again, was a doctor by profession, and then he wrote to Freud, and their correspondence became very, very famous. उसके कुछ हिस्से तो publish भी हुए हैं, और उसके बाद Jung and Freud got together and set up the system. But then Jung was not quite satisfied with what Freud had formulated, so he established his own theory, and his own school flourished. And that school in the development and history of psychology is known as analytical psychology or analytic psychology. So we'll be talking about Jung's analytic psychology. The other famous follower of Jung's is Adler. His full name was Alfred Adler. He was also Austrian, and he developed his own theory, and his theory is called individual psychology. We'll be talking about that. All of these, all three of them were great contributors, and we are talking about the beginning of the 20th century. Then we will, actually these three people were people who kind of created a stir in the European and the American scene at that time. And that stir led to the development of many new theories about how mind works, and particularly what is the nature of mental disorder and how mental disorders may be treated. So we'll be talking about a host of them. They are called the psychodynamic contributors. उनमें बहुत से अहम नाम हैं. एक अहम नाम है कैरन हॉर्नी का, एक और अहम नाम है मोरिनो का, एक अहम नाम है एरिक फ्रोम का. Let me give you a few words about Morino. J.L. Morino was actually a Czech by birth who migrated to America and settled in New York and developed his own system of treatment of mental disorder, which is now known as psychodrama. आपको ये सुन के हैरत होगी कि वो ड्रामे की स्टेज को इस्तेमाल करके ज़हनी अमराज का इलाज करता था. He is the pioneer who developed dramatic techniques for the treatment of mental disorders. So we'll be talking about him. We will then go on to another great contribution in psychology. Apart from those psychodynamic psychologists that I've just described, we'll be talking about what is called humanistic psychology. Humanistic psychology takes into view the human angle of psychology. Carl Rogers is an important contributor in this. And of course, you must have heard about Abraham Maslow. You people who've done some research or some auditions in marketing,
You must have heard his theories of motivation. We'll be talking about him, Abraham Maslow. And then we'll come to how these people led to the development of treatment methodologies. Abhi tak to we were looking at the contributors of these people, how minds become upset, or how symptoms may develop, or how personality may function, and what may go wrong with one's personality. But then, how to correct it? Of course, we talked about psychoanalysis and Adlerian and Jungian, but then we'll be talking about psychological treatment of mental disorders in great detail. This is, of course, up to the 20th century. We'll be talking in that context about Volpe. We'll be talking about Albert Ellis. We'll be talking about Eric Berne. We will certainly talk about encounter groups. अभी तक तो हमने ये देखा कि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने डेवलप की हैं ग्रुप टेक्निक्स भी, कि आप 2, 4, 6 लोगों को इकट्ठा ट्रीट कर सकें. So we'll be talking about that. As all these movements were taking place of treatment in America and in the European continent, there was a very vibrant, zabardast, vibrant and a very dynamic movement taking place in Britain, which is now called anti-psychiatry movement. Anti-psychiatry movement का main thrust ये था कि psychiatrists या psychotherapists जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अद्वियात दे रहे हैं. इतनी ज़रूरत नहीं है लोगों को, बजाय इसके कि वो सही देखें कि उनके प्रॉब्लम्स कहाँ हैं लोगों को, वो नफ्सियाती बीमारियों को दवाई के ज़रिए ही सिर्फ ठीक करना चाह रहे हैं. एंड दे वर ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट्स देमसेल्व्स. वो पढ़े लिखे PhDs, डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स थे सारे के सारे, बट they saw that we overprescribed. They saw that overprescription of medication is a problem in itself. So we'll be talking about the anti-psychiatry school. R.D. Laing is a great name in the anti-psychiatry school, and then Esterson is another great name in the anti-psychiatry school. अभी तक हम, जैसे आपने देख लिया होगा, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ही रहे हैं, और ये हमारी आमतौर पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो यहीं पर ही डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी को ख़त्म कर देती हैं. लेकिन मैं समझता हूँ that we need to go further than that too. So we will go further than that. We will take a look at the development of psychology in Asia and Africa. Particularly, we'll be talking about the development of psychology in Algeria. You must have heard about, if you haven't, we will talk about him, an Algerian psychiatrist, Frantz Fanon. We'll be talking about him. Then we will talk about what the Chinese are doing. Great people. They have brought their country from an agrarian country to one of the most industrialized and developed country in the world today. What is psychology there like? We'll be talking about the psychology in Pakistan. And after we've talked about these, we will then come to the psychology as it stands in the 21st century. And in the 21st century, we have different disciplines developing in psychology all over the world. For instance, consumer psychology. For instance, positive psychology. For instance, sports psychology. अभी देखते रहते होंगे हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में खेल जो है, फुटबॉल है या क्रिकेट है या हॉकी है या इस किस्म एथलेटिक्स है, इस किस्म के जो खेल हैं उसमें करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो लगे हैं, उन पे लोग खर्च कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग हो रही है और लोगों को इन खेलों की वजह से मुल्कों की दोस्तियां बहुत बढ़ रही हैं आपस में, इसके सरमाए का बहुत अदल बदल हो रहा है और इसलिए खेल जो हैं
वो they are a source of generations of billions and trillions of dollars. As a result of that, sports have also invited, or let us say sports have been able to attract the best and the brightest psychologists to help sports people. आपको सुन के हैरत होगी कि विव रिचर्ड्स जो आज से कुछ अर्सा पहले दुनिया के माने हुए बैट्समैन थे, आपने यकीनन नाम सुना होगा, ही कंसल्टेड ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट. उनकी अपनी किताब में इस बात का जिक्र है कि when he went the first time to Australia and he couldn't hit big scores, he talked to his team psychologist and he said, why is it happening to me? Why can't I have been making centuries? Why can't I make centuries anymore now in Australia? And then they sat down and then they discovered various barriers that Viv Richards had in his mind with the help of the psychologist. And when he removed those barriers with the help of the psychologist, Viv Richards rose to become Sir Viv Richards, as you know. So that is the contribution of sports psychologists. This is just one small example. आजकल तो खैर तकरीबन दुनिया की तमाम अहम टीमें जो हैं उसके साथ साइकोलॉजिस्ट जो है वो मौजूद होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. इसी तरह से पॉजिटिव साइकोलॉजी है. अभी तक शायद आपको ये एहसास हुआ होगा कि हमने जो बात की है वो सिर्फ ज़हनी बीमारियों के रेफरेंस से बात की है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो हैं अब वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं. होप क्या है, खुशी क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज होप, what is pessimism, how do people become optimists, what impact has hope and optimism on human behavior and human thought and human mind. That's what they are discovering. Is hope related to long life? Is optimism related to long life? Is optimism and hope related to better mental and physical health? Is optimism related to more productivity in the organizations? ये सारी जो बातें हैं ये साइकोलॉजिस्ट 21st century में डिस्कवर कर रहे हैं, and this is known as positive psychology. We'll be talking about that too. Once we've come up from the ancient times, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से शुरू करके उनकी पैदाइश से कई हजार साल से पहले से शुरू करके हम 21st century तक आज तक की जो डेवलपमेंट है साइकोलॉजी की उसका हमने रिव्यू किया है, और यही रिव्यू जो है ये आपके फाइनल एग्ज़ाम का हिस्सा होगा. ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम तक कवर कोर्स ख़त्म हो गया. एक दफ़ा आपकी याद दहानी के लिए बता दूं दैट द कोर्स will carry 35% weightage for the midterm exam, 50% weightage for the final exam, and 15% weightage for your assignments. ये 100% बन गया. इस दौरान आप असाइनमेंट्स करते आए हैं, वो आपको मिलेंगी, आप उनको करेंगे, आप उनको डिस्पैच करेंगे. अभी देखते हैं कि इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, जिनको हम अंग्रेजी में FAQs कहते हैं. मसलन ये, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ये कोर्स हमने पढ़ना है पूरा का पूरा, तो इसमें इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा है? भाई इम्पोर्टेंट हिस्सा सारी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है. ये ऐसा ना कीजिएगा कि कुछ हिसाब छोड़ दें और कुछ हिसाब पढ़ लें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ ऐसा नहीं होगा भाई. ऑल ऑफ इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज ए लॉजिकल डेवलपमेंट, एज यू मस्ट हैव सीन एंड आई जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टू द मॉडर्न टाइम्स. इट्स ए लॉजिकल डेवलपमेंट. जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आगे आपको इसकी लॉजिक और भी समझ आती चली जाएगी. इसलिए इसमें ये ना पूछेगा कि इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा है. फिर ये कि सवालों की नेचर क्या होगी. दैट्स अनदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन
nature of questions might be both. You might have, in fact, more than two. You might be asked to write a shortish essay. You might be asked to give a small short answer. You might be asked MCQs. You might be asked questions which have just two answers. Click A or click B or click true or false. So I would give you a mixture of all of these. उसमें लॉजिक ये है कि आपको सिर्फ मेमोरी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. मेमोरी डिपेंडेंट से मेरी मुराद ये है कि कुछ हमारे जो जरिया तालीम में हमारे एक जनरल वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान में एक कोई इतनी अच्छी ट्रेडिशन नहीं रही कि एग्जामिनर्स जो हैं वो मेमोरी डिपेंडेंट सवाल पूछते हैं बच्चों से. फलां सन में क्या हुआ, फलां सन में क्या हुआ. वेल, दैट इज गुड. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, एक्सेप्ट दैट students should also know how to use the information that they have collected, and they should also be able to integrate the question that integrate the knowledge that they have in their minds or that they have in their notebooks or that they gather from their books. तो इस किस्म के सवाल जो हैं वो मैं बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें सिर्फ आपकी मेमोरी जॉग नहीं होगी बल्कि आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, थोड़ी सी समझ भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक ये भी है कि सवालों की नेचर ये होगी. शॉर्ट क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस व्हिच टेस्ट योर एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन फॉर एवरीडे लाइफ एंड फॉर एडवांटेज. ये तो सारा कुछ हो गया इसमें कि तमाम के तमाम हमने कोर्स का रिव्यू कर लिया, हमने ग्रेडिंग देख ली, हमने किताबें देख ली, हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लिए. अब आज का जो हिस्सा है थोड़ी सी उसके बारे में भी बात कर लें. मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि आई वुड डिवोट द एंटायर फर्स्ट लेक्चर टू द ओवरव्यू, आई थॉट आई विल आल्सो टच अपॉन द एंशिएंट फिलॉसफी साइकोलॉजी इन द सबकॉन्टिनेंट. सो लेट अस बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह. लेट अस बिगिन द कोर्स फॉर्मली. और उसमें ऐसा करते हैं कि आज देखते हैं कि हमारे इस हिस्से में जिसको हम इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, बर सग़ीर कहते हैं, उसमें साइकोलॉजी की, एंशिएंट साइकोलॉजी या फिलॉसफी की क्या सूरत हाल थी. इससे पहले कि हम ये देखें, जानना ये ज़रूरी है दैट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज साइकोलॉजी, बिकॉज इन द एंशिएंट टाइम्स वी हैडंट डिफाइंड साइकोलॉजी एंड नॉलेज वाज ग्रोइंग, सो वी वुडंट नो विच पार्ट of man's thinking or which part of man's knowledge should we include in psychology. So for that purpose, for us to be able to distinguish what were psychological contributions in the subcontinent, we need to know what is psychology. So here is a definition of psychology. For the present purpose, we can define psychology as a study of man's mind and his behavior or his body. इंसान के नफ्सियात जो है वो इंसान के ज़हन और इंसान के जिस्म या किरदार का एक मुताला है. सो दिस इज़ व्हाट वी वुड स्टिक टू फॉर द टाइम बीइंग एज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. दो तीन बातें जो स्टैंड आउट वेरी क्लियरली इन द एंशिएंट साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट आर दीज. द एंशिएंट मैन थॉट ऑफ another person in the body that he called the soul. Soul, for various purposes, was sometimes an invisible part, or sometimes it was expressed or considered as one's blood. The ancient man in the subcontinent thought that soul existed in the form of blood in the body. That when blood flew out of the body, the soul left the body. And the ancient man also saw or considered soul, ancient subcontinental man also considered soul as something which was invisible. और ये जो escape है soul की, that is what now we see as dream work. What the ancient man saw
was that the soul escaped from the body and performed tasks. We now know it was dream. We have been able to analyze dreams. We now understand them pretty well. उसका भी हम जिक्र करेंगे कि वो मुख्तलिफ कौन सी स्लीप है जिसमें ड्रीम्स या ख्वाब आते हैं और कौन सी स्लीप में ख्वाब नहीं आते, रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप, वो भी उसका जिक्र करेंगे. Then we will also talk about dreams and their interpretations done by famous psychologists. We'll talk about those too. So this is what the ancient man thought, that the soul did things and we saw those as dreams. Then of course the work of the soul was epilepsy fits or fainting spells. Another thing that the ancient man saw, the ancient subcontinental man saw, was the concept of animism. They thought that inanimate objects such as the sun or the moon or stones or rivers or springs, they had a soul and they were alive and they did things. In other words, they humanized these objects of nature. Humanization made it easier for them to understand these things. Another peculiar thing which was subcontinental, of course it's shared by man in other continents also, but we are talking about subcontinent, was the belief in magic. We still, some people still believe in magic, but the ancient man, the ancient subcontinental man, thought that magic played an important part, and that if you could learn magic, you could control your own self, your own thoughts, and others, and other inanimate objects. One of the offshoots of that was the development of yoga. Yoga is not necessarily a kind of a magic, it's exercise, but yoga is an attempt by ancient man to control his thoughts, his mental and his physical functions. By yoga exercises, by breathing exercises, by using different body postures, he thought he could control his thoughts and he thought he could control his psychological functions. योगा का मकसद, बॉडी पोस्चर्स का मकसद, सांस की एक्सरसाइजेस का मकसद था that man should be able to control his mental and physical functions. ये हमारी ancient philosophical या philosophy psychology का हिस्सा रहा है. Animism, soul, yoga, magic, all of these things. That is what we would be talking about, and that is the ancient philosophy psychology of the Indo-Pak subcontinent. That brings us to the end of this course today. We'll be talking about other things with you. We will inshallah take up the Greek philosophy. याद है आपको, मैंने अभी गुजारिश की थी आपसे that we begin with ancient philosophy and psychology in the subcontinent, and then we go on to the Greek philosophy and psychology, and from there take it on. Next time we'll talk about that. Until then, Allah Hafiz, God be with you.